So yeah, so hi guys. So let's start. Let me share my screen first. So guys, so welcome to all you in Salesforce demo session. Let me Yeah, let me let me tell you some of the advantage of Salesforce. So if you are from coding background or maybe non-coding background or maybe non-IT background also, you can easily shift to IT in Salesforce. Why? Because in Salesforce we have 80% functionality we can build without coding. That is without code. But still we have 20% functionality. For that we have to go with code, honestly guys. So if you want to come as a Salesforce and you don't want to do coding, that is not possible. But yes, it's a very minimum code you have to write in Salesforce. But most of the functionality, 80%, we can easily develop. Now second क्या है आपका, why most of the people chooses Salesforce? Because इसका जो course content है ना, course content, that is very small. अभी क्या है ना कि कल को अगर आप जावा पढ़ते हो, लेट्स से इफ यू गो फॉर द एडब्ल्यूएस, उनका कोर्स कंटेंट बहुत लंबा होता है. तो जब तक आप 50% पढ़ते हो, आगे 60% जब पढ़ोगे, आप पीछे लगते हो भूलने. So that's why the course content of Salesforce, that is also minimum. It means you need minimum knowledge for Salesforce, right? Now here we have the low code. Here we have high demand. If you can see the demand of Salesforce in the current industry, because Salesforce is a cloud computing. Salesforce works on cloud, and you can see that now today in the today's world, everyone is using cloud. Even Flipkart, Myntra, Facebook, WhatsApp, right? Everyone is Zomato. Everything we are using only cloud and cloud. So why? That's why demand is high. Most of the clients, they want to build their application on cloud. And if they are talking about the cloud, it means if you can go and search for Google also, you can see here we have the forecast. Google में भी दिया हुआ है that 2021 to 2026, which CRM cloud vendor is going to be on number one. And you can see here we have the Salesforce. Now, so let me tell you some of the history about the Salesforce. So Salesforce has introduced in 1999. 1999 में Salesforce आया था. And in 2004, it got the number one rank. उस समय जब 1999 में आया था, Salesforce was not the number one CRM tool. But in 2004, it got number one rank in all over the world. In all over the world, it got number one rank in the CRM cloud computing. And from 2004 to till now, currently it's 2023, still Salesforce is on number one CRM, right? And you can see it's a current data that is given by the revenue researchers that 2021 to again 26, again 5 साल के लिए, still Salesforce is going to be the number one CRM. So you can see that here, since last 2022 years, Salesforce was on the number one CRM ranking. So you can see that whatever the functionality we are going to build, that functionality also no need to write for the code. So that's why most of the mechanical persons, non-technical person, they are also migrating to a Salesforce in IT. Everyone is clear? Yes or no? yes, Yes. Now let's move. Because see, clients के लिए anyone can develop the functionality, either a coder, a non-coding part, everyone can develop the functionality. But as a developer, if I am a developer, I am from non-technical background, I am from non-coding background, मेरे लिए क्या advantage है? क्लाइंट का तो एप्लीकेशन बन रहा है, उसको एडवांटेज है, उसका एप्लीकेशन कल को मैं बनाऊं या कोई और बनाए, दैट इज फाइन. बट मेरे लिए क्या बेनिफिट है एज ए डेवलपर, सेल्सफोर्स डेवलपर? So as a Salesforce developer, 80% of functionality, for 80% of functionality, no need to write code. But ऐसा नहीं कि that is also very easy. We have to know some logics. Without coding, logics, how we can go and develop the functionality. Let me go. So remember guys, so please note down the URL. If you have to develop your account in Salesforce, we have to go for developer.salesforce.com. Please note down everyone, because I want you to create your account. Fine. Developer.salesforce.com/sign up. And here you have to fill all this form.
your first name, your last name, your email address, that will be your correct Gmail address, right? Then your job role, then your current job role, then your company's country, postal code, and username. So what you can do, the same email address you can copy and paste in your username. That will be easy for you to remember. And then accept the condition and sign me up. Once you click on this sign me up, on your email address that you have provided, you will get a link to reset your password. And once you have reset your password, then always you have to go for login.salesforce.com. Everyone is clear? सब क्रिएट कर लेंगे. Come on, it's very easy. जैसे हम कैसे फ्लिपकार्ट पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, दैट इज फाइन. एकदम एकदम सिमिलर है वो. ओके एवरीवन, जस्ट गिव मी योर कंफर्मेशन. And don't worry, it's a demo session. Just I'm showing you कितना easy है. No need to install in our machine. If you are a good Salesforce developer, you can work in multiple companies parallelly. If you want, you can work 2 companies, 3 companies parallelly. Because what? Only we have to work in browser. Nothing we have to install in our laptop. Now, one more, the most and the major advantage. अभी तो खैर कोविड आ गया. कोविड के पहले भी, if you have a good experience in Salesforce, you can easily get work from home, right? Because only you have to work from browser, so easily company will provide you work from home. These all are the advantages to be a Salesforce developer. Fine guys, just give me a confirmation so that we can move forward. Yes sir. Yes, sir. Now अभी क्या है ना, अभी आप जब you can go for developer.salesforce.com ना. So अगर आप जिससे जब अकाउंट क्रिएट करोगे, that account will not be a 30 days trial version or maybe 60 days trial version. That will be with you. अगर आप इसको 1 साल 2 साल भी रखना चाहो, just you have to remember that it's username and password. अगर आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड आपने कहीं नोट डाउन करके रखा हुआ है, you can use after a year also, after 2 years also, after 5 years also. But the condition is that you have to do login once in a 3 months. 3 मंथ में एक बार लॉगिन करना पड़ेगा. अगर आपने लगातार 3 मंथ में लॉगिन नहीं किया ना, तो सेल्सफोर्स उसको लगता है कि आप और कोई यूज नहीं कर रहे हो, एंड दे आर गोइंग टू रिमूव इट, दे आर गोइंग टू डिलीट इट. क्लियर है सर? यस, I have actually logged into Salesforce through Trailhead. मैं ऐसे ही थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था. दैट इज फाइन. तो आप अभी कहीं से भी लॉगिन कर लो, चलेगा. तो वापस इसमें करना पड़ेगा या that is No, if you already have, what I'm expecting guys, so we are starting a fresh session ना. So for Okay. fresh session I'm expecting to create a new org. ठीक है? All right. इसमें आपने क्या दाल चावल मिक्स किया होगा, I don't know, right? Okay, thank you. That's what I'm saying. Here we have to create a new account and let's get a fresh start. ताकि everything we can learn and we can get the important क्या है, concept gain करना, right? Now जो भी आप यहाँ से डेवलप करोगे, that should be your free account, and once in a 3 months you have to log in so that your org is not going to expire. Fine. Now once you have successfully created your org, you can go for login.salesforce.com, right? And I can go and log in. Let's take any of my previous batches. मैंने already account create किया हुआ है. So once I click on this login now, you can see. So successfully I have logged in inside Salesforce. And let me show you guys why most of the non-technical guys, they are switching in Salesforce, because the development is so easy now. Now we are here. Now this is the first screen you will get after login. This is the first screen, and here we have the list of application. This is app launcher. अगर आप गूगल में आते हो, ये किसका ऐप लॉन्चर है एवरीवन? ये सारे किसने बनाए हैं? कम ऑन. Google. ऑब्वियसली बात है, दिस ऑल आर द गूगल एप्लीकेशंस ना. ये तो गूगल ने बनाया है, गूगल के डेवलपर्स ने बनाया है. नाउ यू आर अ सेल्सफोर्स डेवलपर. सो आप सेल्सफोर्स में जो भी बनाओगे, दैट इज योर ऐप लॉन्चर. आपके एप्लीकेशंस यहाँ रहेंगे. जैसे गूगल के एप्लीकेशंस यहाँ होते हैं, आपके यूट्यूब है, प्ले स्टोर है, राइट, जीमेल है, गूगल मीट है, हियर वी हैव द गूगल एप्लीकेशन. वैसे ही इनसाइड सेल्सफोर्स हियर वी हैव सेल्सफोर्स एप्लीकेशन. इफ यू वांट टू डेवलप, अब एक बात, गूगल के अगर डेवलपर्स को कोई एप्लीकेशन बनाना होगा, सो दे कैन डेवलप इट एंड दे कैन एड इट हियर, right? And what we think, oh my god, it's a new application that has been developed by Google. Same thing also you can do for Salesforce. Suppose if you want to open a new school, you want to open a restaurant, you want to open a bank, so if any application you can develop in your
Salesforce, inside Salesforce. Now, why you want to develop your application in Salesforce? Because you want to manage the data. Suppose let's take example कि आप कोई रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो और आप चाहते हो कि जो भी कस्टमर आपके रेस्टोरेंट को विजिट करते हैं, आप उनका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, right, everything you want to store it so that in future if you are providing any discount on a festive offer, on a festival, अगर आप किसी फेस्टिवल पे डिस्काउंट प्रोवाइड करते हो, so that you can send them an email that for 26th January we are providing 20% flat discount on each and every meal, right? So like that we can manage. So whenever the data will be managed inside the Salesforce, first we have to create a application. सबसे पहले हम application बनाएंगे. Everyone, let's see. As a non-coding background, as a non-IT background, is it easy or tough? So remember, whenever we have to develop a functionality in Salesforce, always we have to go for this setup. और ये सेटअप ऑप्शन जानते हो आपको, दैट इज अवेलेबल इन एवरीवेयर. ये आपके फ्लिपकार्ट में भी है, ये आपके यूट्यूब में भी है, दैट इज ऑन एवरी क्लाउड, वो सब यहाँ रहता है. बट दैट हैज बीन, वो हमारे लिए हाइड किया गया है. राइट, दैट बटन इज हिडन फॉर अस. सिमिलरली अगर वही बटन मुझे ये वाला बटन मुझे फिर से हाइड करना है ताकि एंड यूजर, बिकॉज वी आर डेवलपर ना, हम तो डेवलपर है, वी वांट टू डेवलप फंक्शनैलिटी, सो दैट इज एनेबल फॉर अस. बट मैं चाहता हूं कि ये सेटअप बटन दैट शुड बी डिसेबल फॉर कस्टमर्स जो प्रोडक्ट खरीदते हैं. ऑफ कोर्स वी कैन हाइड इट, जैसे कि फ्लिपकार्ट ने हमारे लिए हाइड किया है, यूट्यूब पे हाइड किया है, फेसबुक पे हाइड किया गया है, राइट? लाइक दैट वी कैन ऑल्सो हाइड इट. बट करेंटली वी आर अ डेवलपर एंड वी नीड दिस ऑप्शन, बिकॉज यही वो ऑप्शन है जहां से हम, चाहे आप एडमिन से डेवलपमेंट करो या कोडिंग से डेवलपमेंट करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई कैन क्लिक ऑन दिस सेटअप. Once I click on this setup, here I suppose I want to open a restaurant, right? I want to develop an application. So यहाँ पे सारे आपके ऑप्शंस आते हैं क्रिएट करने के फंक्शनैलिटी. जब आप अगर सेटअप को आप हाइड कर दोगे ना, तो ये सारे ऑप्शंस आपके अवेलेबल नहीं हो पाएंगे. एवरीवन कैन सी माय कर्सर? कम ऑन. Yes, sir. यस. तो सेटअप ही है जिसकी वजह से यू कैन सी ऑल दीज ऑप्शंस, राइट? अगर सेटअप नहीं होगा, यू कैन नॉट सी दीज ऑप्शंस, इट मींस यू कैन नॉट डेवलप एनी फंक्शनैलिटी. सी डेवलपमेंट से यहाँ पे है, राइट? नाउ मुझे बनाना है एक एप्लीकेशन, सो आई कैन गो एंड राइट हियर ऐप मैनेजर. कैन सी ऐप मैनेजर, सी हाउ इजी इट इज. फाइन, आई वांट टू क्रिएट ए एप्लीकेशन, लाइटनिंग ऐप. आपके एप्लीकेशन का क्या नाम होगा? आई कैन प्रोवाइड अ नेम स्पाइसी चिली रेस्टोरेंट. मैंने नाम डाल दिया स्पाइसी चिली रेस्टोरेंट. फाइन. हियर वी हैव ए ब्रांडिंग. ब्रांडिंग किसको बोलते हैं? लोगो को. ऑब्वियसली बात है, सबका ये देखो, ये फ्लिपकार्ट का लोगो है यहाँ पे, ये आपके व्हाट्सएप का लोगो है. ऑब्वियसली बात है, आप कभी भी कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो उसका एक लोगो होता है. अगर आपका भी कोई लोगो है, सो दैट लोगो यू कैन गो and upload it. So here we have some logos, so I can go and upload this logo, open it. So that logo will be upload. हो गया आपका लोगो अपलोड. अभी आपका जो कल को आप जो रेस्टोरेंट खोल रहे हैं वो इस लोगो से जाना जाएगा. इफ यू आर गोइंग टू डू द एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो, अगर आप मॉल्स में एडवर्टाइज करते हो, आप कहीं रोड साइड पे एडवर्टाइज करते हो, so you are going to advertise with this logo. That is your restaurant that is going to be open soon. Fine, and here we have the logo and your restaurant name. You can provide the description also, right? Veg and non-veg meals, right? You can provide the, see यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया ना, तो वेज और नॉन वेज जैसे आपने यहाँ टाइप किया. See, we are not going to write any code, but how that Flipkart, YouTube developers, they are going to handle the cloud now, that's exactly same we are handling now. Now as a developer, we need full access. We are given our application will be available on desktop as well as phone, ताकि phone से भी लोग customer access कर पाए. That's exactly. Next, this type of page will be developed. Next, here what are you expecting? I'm going to add two objects, एक लेते हैं home, and I can take one more account so that I can show you the comparison जो Salesforce ने बनाया and what we are going to develop. Next, and I can take a system admin profile, because system admin is the most powerful profile in Salesforce and developer is known as the system admin profile. Fine, and save it. See how easily, kitna easy, just next किया हमने and we have developed our application. अभी आप क्या करते हो?
अगर आप गूगल पे जाते हो, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन खोलना, यू कैन क्लिक ऑन दैट। सपोज मैंने क्लिक किया, हियर वी हैव यूट्यूब पे, तो यूट्यूब ओपन हो गया। सो आप जिस भी एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो वो ओपन हो जाता है। एग्जैक्टली सेम इन सेल्सफोर्स। आपने जो एप्लीकेशन बनाया है, क्या बनाया आपने? स्पाइसी, राइट? Spicy. I can click on that, and I can click on that, and you can see the logo is available, your application is available, and here we have the two objects that we have taken. Exactly same. अभी आपके ऐप लॉन्चर में आपका एप्लीकेशन भी है, उसका लोगो भी है, and that logo is the identification, that is the branding of your application. सर एक क्वेश्चन था, Yeah. आदित्य बोल रहा हूँ सर। एडमिन और डेवलपर में बेसिक डिफरेंस क्या है? मतलब एडमिन ऐसे कौन से काम है जो डेवलपर नहीं कर सकता, ऐसा कुछ है? और नहीं, डेवलपर that is the advantage of development. एडमिन ऐसा काम है जो एडमिन है जो डेवलपमेंट नहीं कर सकता, बट डेवलपर ऐसा कभी नहीं है जो कभी एडमिन का काम ना कर सके। दैट्स व्हाई ऑलवेज कंपनीज प्रेफर डेवलपर्स। कल को एडमिन का टास्क हो या डेवलपमेंट का टास्क हो, ही कैन डू इजीली, राइट? इसीलिए सबसे पहले हम एडमिन कवर करते हैं। एडमिन कंप्लीट होने के बाद देन वी गो फॉर द डेवलपमेंट पार्ट, राइट? ओके। So that's why अगर मार्केट में जाते हो आप इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आपके पास 100 जॉब्स अवेलेबल है, so out of 100 of 90 jobs will be for developers, only 10 will be for admin. That's why see, अभी हो सकता है कि आपको डेवलपर हायर करके, और 90% लोगों को जानते हो क्या होता है, हायर करते हैं एज ए डेवलपर बट दे आर गोइंग टू यूज एज एडमिन। बट हायरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इंटरव्यू क्रैक करना, एंड इंटरव्यू दे आर एक्सपेक्टिंग ए डेवलपर। Although they are going to take, although they are going to provide the work as a admin only, but they are expecting to be a developer. Okay, ओके। fine. अभी let's take example, ये तो मेरे पास मेरा रेस्टोरेंट बन गया, एप्लीकेशन बन गया, I can switch into my application. But here, if I want to store the data of my customer, so here I want to develop a customer. जैसे यहाँ पे होम टैब है, अकाउंट टैब है। नाउ टेल मी गाइस, यहाँ पे अगर कोई ग्रोसरी एंड मोबाइल टैब के बीच में मुझे कोई एक और यहाँ पे टैब्स डालना हो, कैन वी पुट इट? नो, बिकॉज व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट फ्लिपकार्ट डेवलपर्स। बट ऑफ कोर्स फ्लिपकार्ट के जो डेवलपर्स होंगे, दे कैन इजीली ऐड ए टैब हियर। यहाँ पे मोबाइल पे क्लिक करते हैं, आई कैन सी द मोबाइल्स, I can click on the TV appliances, I can see the TV appliances, I can get the data, right? So what I can do, exactly same as a Salesforce developer, here also I want to create one more tab so that I can click on, abhi yahan pe see, I can click on the account, I can click on the new button of account, I can see here a page, और इस पेज को सी गाइस, इस पेज को अगर आप कोड से डेवलप करते हो ना, एटलीस्ट 1000 लाइन्स ऑफ कोड यू हैव टू राइट। But in Salesforce, this whole page we can develop without writing any single line of code. एक line का code नहीं लिखूंगा and the whole page will be developed. That is the advantage of Salesforce, and most of the guys they are switching here. Because ऐसे ऐसे फॉर्म बनाने के लिए अगर आप जावा में या एंगुलर या फिर HTML में बनाओ ना, it will take approximately 800 to 1000 lines of code, including button, because button की भी coding होती है, right? But here we are not going to write any single line of code and the whole page we can develop. Don't worry, I will show you. एक छोटा सा सैंपल मैं आपको शो करता हूँ। एग्जैक्टली सेम जैसे अकाउंट का है ना, वैसे यहाँ पे मुझे बनाना है कस्टमर के डिटेल्स के लिए, राइट? सो आई कैन गो एंड क्रिएट ए कस्टमर डिटेल्स। और अगर आपको यहाँ पे मेन्यू के ऑप्शन दिखाने हैं, what are the menus you are selling in your restaurant also, so that option also you can provide it here. Fine. So let me show you the menu detail first. So उसके लिए मुझे यहाँ पे टैब बनाना पड़ेगा, और टैब हम टैब को बोलते हैं इन बैकएंड में वी यूज्ड टू से एज ए ऑब्जेक्ट। डोंट वरी, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे आया, एंड हाउ वी कैन डेवलप ए ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी इन द डिटेल एक्सप्लेनेशन व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेशन। अभी के लिए जस्ट नो दे ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे सब क्या है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स। हियर ऑल्सो वी वांट टू क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट, and that object I want to use as a tab. It's very simple. So for that, let's create it. So I can go for setup. Setup पे कभी भी कुछ भी डेवलप करना हो, always आंख बंद करके we have to go for setup only. Object manager. And here we have the option of create custom object. अब ऑब्जेक्ट का आप नाम क्या, सपोज मैंने नाम रखना चाहता हूँ मेन्यू। Fine. I can take here menu. I can provide here what?
The first name I can provide here, let's take here item number, right? I can provide product number. Fine. And here I can provide that will be auto number. जैसे जैसे हम मेन्यू ऐड करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे काउंट भी इंक्रीज होगा. So I can provide what? Product ID. Product ID. मैंने नाम डाल दिया प्रोडक्ट आईडी एंड दैट विल बी. कैसे आप जाते हो जब रेस्टोरेंट में, तो जब भी आप कुछ रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हो तो ऑटोमेटिक बिल जनरेट होता है, बिल नंबर. सो दैट बिल नंबर इज गोइंग टू स्टार्ट ऑटोमेटिक. यहाँ पे क्या आपका प्रोडक्ट नंबर ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 ऑटोमेटिकली नंबर स्टार्ट हो जाता है. दैट इज द ऑटो नंबर. एंड डोंट वरी, इट्स ए इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन ऑल्सो, that at the time of object creation, what are the two default data types given by Salesforce? That is text and auto number. It's an interview question जो हम आगे करेंगे in our regular session. Fine. Then we are going to enable that reports, activities, field list. इन सबका एक अलग separate हमारे पास सेशन है. Reports क्या करता है? आपको चेक करना है कि लास्ट के 3 मंथ में क्या सेल हुई, क्या सेलिंग हुई, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. लास्ट के 1 मंथ में क्या सेलिंग हुई आपके रेस्टोरेंट में, लास्ट के 1 ईयर में क्या सेलिंग हुई. सो उसके लिए आपको एक रिपोर्ट्स जनरेट करना होता है. सो दैट इज व्हाई हियर वी कैन यूज द रिपोर्ट्स. Fine. So don't worry guys. So for that we have a separate session. Currently just we are enabling it and just we are viewing on UI what we can see. Now here we have the allow search. So guys, over to you. अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, let's take here we have iPhone. Can you guys tell me वो कहाँ पे सर्च करेगा? Come on. If I am going to search iPhone, वो कहाँ सर्च करेगा? Come on. मोबाइल. डेटाबेस में, राइट. अगर आप आईफोन सर्च करते हो ना तो वो आईफोन आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी अप्लायंसेस, मेंस, वीमेन, बेबी किड्स, सब में वो सर्च करता है. लेकिन उसको मिलता कहाँ है? उसको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक्स में. यहाँ पे है सारे मोबाइल्स. तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे जो सर्च कर रहे हो केवल आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में आकर सर्च करता है. नहीं. The functionality is that whatever you are going to search here, that is going to search in all the objects. सब में, because सब में डेटा है ना, women's में भी डेटा है, men's में भी डेटा है, baby kids में भी डेटा है, वो सब में डेटा है. लेकिन ये जो आईफोन वो कहाँ सर्च करता है? That is going to search in all the objects, but डेटा कहाँ मिलता है उसको? इलेक्ट्रॉनिक्स में. और जब डेटा उसको मिलता है so that data will be pulled out. Exactly same here we have also. आप कल को यहाँ पे जो भी कस्टमर आएंगे उस कस्टमर को यहाँ से आप सर्च कर सकते हो. दैट इज द सर्च. उसके लिए मुझे ये एक्सेस देना होता है अलाउ सर्च, कि आप अलाउ हो कि आप यहाँ ग्लोबल सर्च से सर्च कर सकते हो. फाइन. देन वी हैव ऐड नोट्स एंड अटैचमेंट एंड ऐड टैब. मुझे टैब क्रिएट करना है. सेव इट. गाइस डोंट वरी, आज मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ बिकॉज इट्स अ डेमो सेशन. आई जस्ट वांट टू शो यू मल्टीपल थिंग्स ना. Fine. So here we have the menu. I can take कोई भी कलर ले सकते हो आप. I can take any color. Next. Fine. Next. I can add here in the spicy and chili. Save it. हो गया आपका. Now the object is created. See, menu object. देखा है. अब आप बोलोगे आप यूआई पे कैसे दिखेगा? जाओ यहाँ पे. यही काम आपके फ्लिपकार्ट्स करते हैं, यही काम आपका अमेज़न में होता है. I can go and refresh this page. And once you refresh this page, can you see this option, everyone? Yes, yes. Of course. जैसे आप अकाउंट्स पे क्लिक कर पा रहे थे वैसे आप मेन्यू पे भी क्लिक कर पा रहे हो. बट अकाउंट्स पे क्लिक करके आपके अकाउंट्स की लिस्ट दिखती थी यहाँ पे. बट अगर मेन्यू पे क्लिक करते तो मेन्यू की लिस्ट नहीं दिखती, बिकॉज अभी हमने नया बनाया है, इसके अंदर मैंने कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं किया. हियर वी हैव द प्रोडक्ट नंबर. अगर अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम, so I can click on the account new button and I can see this page. It's a good page. It's a long page, right? But if I click on this menu option, I can click on the new option, that menu, and I cannot see anything here. It's just a product number. It's just a owner ना. Don't worry. अभी तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है. अभी इसके अंदर हम फील्ड्स बनाएंगे. ये जो आपको दिख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकली? दे आर द फील्ड्स. इसको क्या बोलते हैं? दिस ऑल आर द फील्ड्स. ये सबको फील्ड्स बोलते हैं टेक्निकल वे में. तो आपको आज से ही टेक्निकल बातें करनी है. That is fields. So I can go in the menu and here I want to create some fields like customer name चाहिए मुझे, customer mobile number चाहिए, customer
आपको ईमेल चाहिए, एड्रेस चाहिए, व्हाट फूड ही हैज ऑर्डर्ड, वेज एंड नॉन वेज, राइट? दैट यू आर एक्सपेक्टिंग हियर. कम ऑन, जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन ताकि मैं आगे बढ़ूं गाइस. यस सर. यस सर. चलो, अभी तक हमने अभी तक एप्लीकेशन बनाया, कोई कोड नहीं लिखा. हमने ऑब्जेक्ट बनाया, कोई कोड नहीं लिखा. चलो फील्ड भी बना के देखते हैं. सो फॉर डेवलपिंग फील्ड वी कैन गो फॉर, चाहे आप तो नॉर्मल बेस जा सकते हो, और हियर वी हैव स्कीमा बिल्डर आल्सो. Schema builder, what is it? So don't worry guys, schema builder, we have detail note, everything we are going to see in detail. See, we can use schema builder. Open it. Fine, clear all. So I can provide here what? Menu. आ गया मेन्यू जो हमने बनाया था. All objects, I can take the menu. Here we have. अब मेन्यू में आप क्या क्या डालना चाहते हो? अच्छा, मेन्यू में तो हमें कस्टमर के डिटेल नहीं डालना है ना. मेन्यू में क्या डालना है? मेन्यू का नाम, आप क्या सेल करना चाहते हो. सो आई कैन टेक हियर व्हाट एलिमेंट्स, और यहां जाओगे आपको दिखेगा व्हाट टेक्स्ट. Just add it here, drag and drop, right? In drag and drop I can provide what, I can provide the what, that product name. Fine. Length, let's take 30 character, that is sufficient. Product name required, save it. Fine. Then I can provide product type. It's a veg or non-veg. So type will be a pick list field. Pick list क्या करता है, हम इसमें ड्रॉप डाउन चूज करते हैं. प्रोडक्ट टाइप, ये कौन सा प्रोडक्ट टाइप है, तो दैट इज वेज है और नॉन वेज है. दैट वी हैव टू एक्सप्लेन. वेज और नॉन वेज, इसको आप चाहो तो एक्सपैंड भी कर सकते हो जितना भी हुआ. मैंने वेज एंड नॉन वेज लिया. प्रोडक्ट टाइप क्या होगा, ठीक है. और कोई भी प्रोडक्ट आप अगर सेल करें उसका प्राइस भी होगा. प्राइस विल बी अ करेंसी. एवरीथिंग हैज बीन गिवन, करेंसी, राइट? प्रोडक्ट प्राइस. प्राइस विल बी, लेट्स टेक 3 characters, 2 decimals, right? You can make it safe. Fine. अभी आप चाहो so what you can go for the layout, और layout में जाके हम उस प्रोडक्ट को ऐड कर ताकि वो UI पे दिखे. अभी लेट मी शो यू गाइस. अभी आप जाओगे यहाँ पे, लेट्स गो फॉर द, यहाँ पे जाओ, एक बार इसको रिफ्रेश करो और देखो हमने कितनी जल्दी 3 फील्ड्स ऐड कर दिए एंड वी हैवंट रिटन एनी कोड. क्लिक ऑन दिस न्यू बटन. व्हाट आई कैन सी, प्रोडक्ट नेम एक तो आ गया है. आई कैन सी द प्रोडक्ट नेम. टाइप और वो नेट, क्यों? क्योंकि टाइप और उसके लिए अपने को ऐड करना पड़ेगा लेआउट में. आई कैन गो इन द मेन्यू लेआउट. और प्रोडक्ट के अलावा क्या क्या थे, प्रोडक्ट नेम के अलावा क्या है यहाँ पे, टाइप है. आई कैन टेक दिस टाइप, आई कैन टेक दिस प्राइस. जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप. आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनी कोड. सेव इट. जाओ यहाँ पे वापस एंड जस्ट गो एंड रिफ्रेश इट. It's a good practices to be a developer. Whenever you are going to develop any functionality ना, उसको चेक करने के लिए always try and refresh it. See here, आ गया product name, product type, veg, non-veg, and here we have price. Everyone is clear? Yes or no? Yes, sir. See कितना easy है. अभी तो हमने 3 बनाया, आप चाहो इसे 30 बना लो, 300 fields बना लो, doesn't matter. No need to write code. I can provide the product name. So product name I can provide. Let's take here we have mango juice. Right, and let's take, I can provide, यहाँ पे दिख गया price. I am giving the price as rupees 1110. That will be a veg, and I can go for what, 1110, same price. Save it now. The product, one product is added, product code, product number, right? If you want, you can add one more new, right? I can provide what, veg biryani, right? The price, let's say I can provide rupees 250. Okay? It's a veg. I can go for what, 250. Save it. Second product has been added. So like that you can add number of products. Click on that menu now. Here we have the 2 products. आपको product number के अलावा product का नाम भी चाहिए यहाँ पे, because I can see the product number, but I cannot see the product name. So what I can do, I can just go to all,
And here we have what? Filter list. Select fields to display. See, अभी हमें कोडिंग कहाँ करनी है, बस हमें बस सेटिंग सीखना है, कहाँ पे क्या ऐड करना है. एड इट हियर. आई वांट प्राइस आल्सो. नहीं, प्राइस तो वहां दिख ही जाएगा मेरे को. आई कैन टाइप आल्सो. सेव इट. नाउ सी अवेलेबल हियर. प्रोडक्ट 1 क्या है आपका? मैंगो जूस है जिसका प्राइस है 110. प्रोडक्ट 2 है आपका वेज बिरयानी है 250. हियर वी हैव वेज रेसिपीज. तो कल को कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे जाता भी है और आपके सेल्सफोर्स में, सो ही कैन गो एंड सी ऑल द प्रोडक्ट्स एंड ही कैन सी प्राइस क्या है. Everyone is clear? So like that, if you want, you can add n number of products so that your customer can see. Or if you want to add the product, if he's going for the online order or maybe offline order, so that also it can be added. Right, everyone? Yes, sir. So guys, it's a small Yes, piece sir. that we have developed. Like that, you can go and add multiple. अभी एक बात बताओ, मैं चाहता हूँ if I'm going to select veg, so I want the veg recipe should be available. अगर मैं नॉन वेज सेलेक्ट करूँ, ऑटोमेटिकली नॉन वेज रेसिपीज अवेलेबल हो जाए. इस चीज को अगर आप कोड पे लिखोगे ना, मल्टीपल्स इफ कंडीशंस एल्स कंडीशन यू हैव टू राइट. बट इन सेल्सफोर्स सब हैंडल कर दिया गया है बिना कोड के. नाउ इफ आई कैन गो एंड, चलो उसको भी डेवलप कर देता हूँ आपके लिए. I can take one more recipe field with the name of pick list, and that will be, let's say, recipes. Recipes. उस recipes में अभी के लिए मैं नाम नहीं डाल रहा. आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग वेज 1 वेज 2. आप चाहो तो नाम डाल लेना. वेज 3, वेज 4 एंड वेज मतलब नॉन वेज, एंड वेज 2 एंड वेज 3. राइट. सो मैंने कुछ वेज लिया रेसिपीज, कुछ नॉन वेज के लिए. आप ले सकते हो यहाँ पे पनीर, चिकन, एनीवन, एनीथिंग यू कैन टेक इट. फाइन. सेव इट नाउ. सेव किया मैंने. I can go to that layout and let me add on the layout. Field create करने के बाद we have to go and add on the layout recipes. Save it now. चलो मैंने ऐड कर लिया. I can go to the UI. चलो एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं. Let's see कि वो यहाँ ऐड हुआ कि नहीं हुआ. कितना इजी है. इस एक फील्ड को अगर मुझे कोड से करना होता ना, अगर तो गाइज मुझे क्लाइंट से 1 वीक का टाइम लेना पड़ता एंड एटलीस्ट 150 to 200 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ता 1 वीक टाइम लेके. यहाँ पे आपको 2 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा, और टाइम हम वही लेते हैं. क्लाइंट बोलता है कि मुझे एक फील्ड ऐड करना है ना, वी यूज्ड टू टेक 1 वीक ऑफ टाइम ऑनेस्टली, और ये काम मुश्किल से 2 मिनट का होता है. फाइन. सो आई कैन गो देयर, क्लिक ऑन दिस न्यू बटन. यू कैन सी हियर रेसिपीज इज अवेलेबल. बट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर मैं वेज पे क्लिक करूं, आई वांट ओनली वेज रेसिपीज. यहाँ पे दोनों आ रहे हैं. और अगर मैं नॉन वेज पे क्लिक करूं, आई वांट टू गेट ओनली नॉन वेज रेसिपीज. एवरीवन इज क्लियर? यस और नो? कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. दैट इज वेरी सिंपल. इसके लिए सेल्सफोर्स ने एक फीचर्स दिया है, दैट इज फील्ड डिपेंडेंसी. डोंट वरी गाइस, धीरे धीरे सारे नाम आपको याद हो जाएंगे. वी कैन गो फॉर फील्ड से रिलेशनशिप में जाएंगे, और यहाँ पे मेन्यू के अंदर में हमने जो बनाया उसके अंदर एक ऑप्शन है, दैट इज फील्ड. एवरीवन कैन सी दिस नेम, फील्ड डिपेंडेंसी. कम ऑन. Yes, sir. So click on that field. सर आपका कर्सर नहीं शो हो रहा है. Everyone, कर्सर शो नहीं हो रहा है. बाकी सबको दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर. तो माइट बी आपके साथ अभी दिख रहा है सर. दिख रहा है ना? चलो अभी दिख रहा है सर. यस. हाँ, आई थिंक आपका इंटरनेट स्लो है. फाइन, नो वरी, चलो कोई नहीं. सो यहाँ पे आपको फील्ड डिपेंडेंसी में जाओगे ना, तो हियर वी हैव 2 फील्ड्स, कंट्रोलिंग फील्ड एंड डिपेंडेंट फील्ड. अब आप ये बताओ कौन किसको कंट्रोल करेगा? टाइप रेसिपी को कंट्रोल करेगा या रेसिपी टाइप को कंट्रोल करेगा? क्या लगता है आपको? कम ऑन. So type टाइप करेंगे रेसिपी को controlled कंट्रोल recipe, कर. because आप type select करेंगे like yes, veg तो veg होना वेज चाहिए. आएगा. यस. सो टाइप रेसिपी को कंट्रोल करेगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंट्रोलिंग फील्ड कौन हो जाएगा? टाइप. और डिपेंडेंट कौन हो जाएगा? रेसिपी. टाइप रेसिपी को कंट्रोल कर रहा है, और रेसिपी टाइप पे डिपेंडेंट है. दैट्स इट. कंटिन्यू करो. फाइन. आई कैन टेक, अगर टाइप आपका वेज हो, आई वांट ओनली वेज विल बी अवेलेबल. अगर टाइप आपका नॉन वेज हो यहाँ पे, तो ओनली नॉन वेज विल बी अवेलेबल. इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लो और सेव कर लो. सी कितना इजी है.
आपको अब कोड ही नहीं लिखना है। फाइन, 80% फंक्शनलिटी नाउ गो देयर। अभी अब देखो, अब क्या मैं रेसिपी ले सकता हूँ? नो, यहाँ पे मैं क्या रहा, बैन आ दिखा रहा है ना, रेड बैन, कि आप रेसिपी चूज ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने टाइप नहीं चूज किया। आप बोलता है पहले आप टाइप चूज करो, तो हम रेसिपी चूज करने देंगे, एंड दैट रेसिपी विल बी अवेलेबल ओनली वेज। अगर आप लेते हो नॉन वेज, रेसिपी विल बी नॉन वेज। सी, everyone is clear? What is the use of field dependency? See how interesting it is. Come on. Yes, sir. Fine. So like that, n number of functionality we are going to develop. और उसके लिए हमें कोड लिखने की जरूरत है। आप देखते हो, जैसे ही आप फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, प्रोडक्ट खरीदने के जैसे ही आपने पेमेंट किया, सडनली यू विल गेट ए मेल दैट यू हैव बॉट दिस प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज। वो ऑटोमेटिक ईमेल कैसे आता है? वो ऑटोमेटिक ईमेल हम भी यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं हियर इन आवर सेल्सफोर्स, बिकॉज वी हैव व्हाट, सी, ईमेल अलर्ट, है ना, ईमेल अलर्ट आ गया ना। उसके लिए कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बिना कोड के डायरेक्टली वी कैन सेंड द ईमेल। और इस चीज को अगर आप कोड से लिखोगे, अगेन यू हैव टू राइट एटलीस्ट 700 to 800 लाइंस ऑफ कोड। आपको पहले ईमेल बनाना पड़ेगा कोड से, फिर ईमेल को फायर करना पड़ेगा कोड से, कंडीशंस लिखने पड़ेंगे कोड में। सो अगर आप कोड से करते हो तो बहुत अलग ही लफड़े हैं, राइट? बट without any code, with admin process also we can develop so many functionalities. Okay guys, clear है everyone? Yes, sir. Now, ये तो बात हुई एडमिन की, कितना इजी है। अभी लेट्स गो एंड लेट्स टॉक अबाउट द 20%, जिसको सब बोलते हैं कि नहीं सर, आई डोंट वांट टू लर्न, इट्स अ कोड। एवरीवन इज क्लियर? कैन वी गो फॉर द कोड नाउ? लेट्स सी अगर कोड टफ है, हाउ मच इट इज, इसमें क्या हम, मेरे लिए क्या एडवांटेज एज ए डेवलपर, मेरे लिए क्या एडवांटेज इफ आई एम गोइंग टू बी अ कोडर। कम ऑन। So first let me go, guys, let me see, anyone has any query? No, sir. We can move on. Chalo. Now for coding, let me show you the first pages सब जो हमने कोड से बनाया है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कोड इजी है, टफ है, नहीं हो पाएगा। फाइन, so let me go for, I think here we have something, let me go, so we have that accounts. See this page. Fine, it's a car inquiry. If I click any of the car, I can see the specification. Baleno ke liye I can see the Tata Nexon specification. I can see what XUV expression. So मैं जिस भी image पे click करूंगा, I can see. Right, everyone? Yes, sir. देखने के बाद Yes, sir. I can click on that and I can see. So how it is possible? Now, अभी मैं को 2-3 और pages दिखाता हूँ. Here we have some more pages. Do we have? Let me open it. Here we have car inquiry तो हो गया। इसी चीज को हमने we have called it through button. God. Book flights, and one more we have. Let me go for object. You can go for opportunity. I'm just showing you some of the पहले मैं वो functionality दिखाता हूँ, then we're going to see कि ये कितना tough है, कितना easy है. See here this page. You can see this page background, and here we have we're providing some numbers. We're providing some numbers, and that numbers, if I want to add it, I can add it. I can subtract it. I can multiply it. Right, everyone? सबने देखा ये दूसरा वाला? Yes, sir. Yes, sir. Right. Very good. I can go to book flight. Let me show some more images. एक वहां भी था जहां पे मैंने let me go for contact maybe.
ये सारे हमने कोड से बनाया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द कोड। जो जिसको लगता है कि कोड इज वेरी टफ, सी वीडियो एलसी, राइट? चूज द वीडियो, दैट वीडियो यू वांट टू प्ले। मुझे चाहिए, आई वांट टू सी तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्लिक ऑन दैट, आई कैन सी हियर इनसाइड Salesforce, right? I want to see Chota Bheem, I can click on that, I can see that video. Even you can play it also, right? Everything we can build because now we are developer. तो मैं ऑनेस्टली ये सारे के सारे हमने कोड से बनाए, राइट? दैट इज बिकॉज ऑफ कोड। अब मैं आपको दिखाता हूं कि व्हाई आई एम सेइंग दैट द Salesforce कोडिंग इज सो इजी। एवरीबॉडी सीन द फंक्शनैलिटी? कम ऑन, आगे बढ़े अपन। यस सर। नाउ लेट्स गो विद द फर्स्ट वाला जो भी था अपने पास, अकाउंट्स, दिस कार इंक्वायरी। वाई आई एम सेइंग, पहली बात तो जो हमने 3 इमेजेस, जो हमें जितने भी इमेजेस दिखाने हैं, दैट इमेजेस वी कैन डाउनलोड इट। हम डाउनलोड कर सकते हैं गूगल में जाके। और उसको कैसे आप स्टोर करते हो, वैसे ही वी हैव स्टोर्ड इट हियर। एक जगह है स्टैटिक रिसोर्स, सी मैंने स्टैटिक रिसोर्स में गया एंड आई हैव स्टोर्ड हियर सारे इमेज, सी नेक्सॉन, बलेनो, राइट? सो सब इमेज को मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया स्टैटिक रिसोर्स में, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द कोड, let's move to the code and let me show you the code. I can go there, I can go to here, we have, I can go to the which component, flight, second component नहीं होगा, third, maybe third और fourth होना चाहिए। नहीं ये नहीं है, maybe third होगा। नहीं ये आपको YouTube का है, छोटा भी मगड़ा, you can see, but let me go for the second component, sixth component. No, where it is, कौन सा ये फर्स्ट फ्लाइट का तो हो गया, ये सेकंड कंपोनेंट क्या है फिर? yes, here we have, see car inquiry, fine. Now you can see, अभी हमने जो भी ये जो इमेज ये सेव किया है, कहाँ पे किया है? स्टैटिक रिसोर्स में। सो स्टैटिक रिसोर्स से पुल करने के लिए वी हैव व्हाट, यही बस 4 लाइन का कोड है। इसी 4 लाइन को हमने फिर से रिपीट किया, हमने फिर से रिपीट किया। सी अगेन वी आर, सीखना अपने को बस ये 4 लाइन ही है, और ये 4 लाइन वी आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, रिपीट करते हैं एंड ओनली वी आर चेंजिंग द इमेज। केवल हमने इमेज चेंज किया, इमेज चेंज करने के बाद हियर वी हैव बटन, और उसको हमने यहाँ पे शो किया, दैट्स इट। आप बोलोगे सर ये तो आपको कोड याद है, यू कैन लर्न इट। ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो, ये कोई कोड याद नहीं रखता। व्हाट आई नीड, Salesforce has given us a library. Salesforce has given us a library. See, that is the Salesforce, that is the advantage for Salesforce developer. आपको कॉपी पेस्ट करना आता है, you are developer in Salesforce. See, यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको डेट फील्ड बनाना है, दिस टाइप का डेट फील्ड, हियर वी हैव द कोड, कॉपी इट एंड यूज इट। अगर आपको टाइम के लिए बनाना है, यहाँ पे टाइम आ गया आपके पास, सारे टाइम आपको टाइम्स के लिए बनाना है, हियर वी हैव द कॉपी द कोड एंड यूज इट। सपोज इफ यू वांट टू गो फॉर इनपुट, टेक्स्ट इनपुट, ये टेक्स्ट इनपुट जहाँ पे आप टाइप कर सकते हो कुछ, ये बनाना है, सो हियर वी हैव द कोड, कॉपी एंड यूज इट। कोड इज ऑलरेडी गिवन, राइट? आपको पासवर्ड इनपुट्स बनाने हैं, लाइक दिस पासवर्ड इनपुट्स, सो हियर वी हैव द कोड, जस्ट कॉपी दिस एंड यूज इट, फाइन। नाउ let me show you the code. So here इस कोड में मैंने क्या यूज किया, लाइटनिंग लेआउट। आपको लाइटनिंग लेआउट का कोड नहीं पता, बट यू हैव टू यूज इट। So you can go to the library, you can ask here, I want what? Lightning layout. See, आ गया layout ना, click on that. So ये आ गया आपके पास lightning layout. Lightning layout. Just you have to go and copy it and use it. वही तो मैंने किया है, lightning layout और lightning layout item. I have just copied it and see, मैंने यूज किया उसको। Fine. Yes, sir. Lightning card. Lightning card. That light. Just go there and provide here. What I want to search for card.
Here we have lightning card, search it, and here we have the see, ये कार्ड है आपका, ये आपका lightning card का कोड आ गया, ये नैरो कार्ड है, ऐसे कार्ड बनेगा. Here we have the code. So just we have to copy this card and just paste in our code. बस इसको use कैसे करना है ना, that we have to learn. That's what I told you. Java में .NET वहां पे आपको as a developer you have to remember, you have to learn all the codes. But यहाँ वैसा नहीं होता है. Whatever you want to develop on the UI, just go in the library, take it, copy the card, copy the code and just go and use it. But उसको use कैसे करना है वही तो आपको सीखना है. That you have to learn it. Now, let me show another. जो मैंने आपको वो कलरफुल पेज दिखाया था about the UI. So I think that was on opportunity object. Opportunity object. Fine. If I can open it, I can see here this page. यहाँ पे we can go and go for addition, subtraction, multiplication. इस पेज की बात करोगे आप. तो ये क्या है, 2 इनपुट फील्ड्स है और 3 बटन है, यही है ना. मुझे इनपुट फील्ड्स बनाने हैं. Where is the code? I can search for input. Click on that. मुझे इनपुट बनाने हैं. Here we have the input. यही है इनपुट, राइट. ये वाला इनपुट है. I can take. मैंने क्या किया, ये कोड को कॉपी किया and that code copied and I have pasted here in the developer console. First वाला जो है ना अपने पास, let's go for the first code. Let me show you the code. मैं उसका कोड दिखाता हूँ आपको. See. So here we have पहला इनपुट मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया. दूसरा कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया. 2 आ गए इनपुट. इसके बाद मुझे क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू मुझे यहाँ पे 3 बटन चाहिए, ऐड, सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई के नाम का. मुझे नहीं आता कोड. I don't know coding. So I can go there, I can ask, can you give me the code of button? I can type button here. So here we have the button, click on that. So ये सारे बटन्स आ गए यहाँ पे. कौन सा बटन चाहिए आपको? मुझे ये ब्लू वाला बटन चाहिए. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बटन चाहिए. So I can take first code, second code, third code. Copy this third code. वो इस कोड को कॉपी किया मैंने and I have just pasted what? 3 times. 1, 2, 3 बार मैंने उसको पेस्ट किया और मैंने बस नाम चेंज कर दिया, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई. क्या क्या टफ है, कॉपी पेस्ट ही तो करना है. फाइन. आपको इसमें क्या चाहिए था, बैकग्राउंड चाहिए था थोड़ा सा इमेज के साथ, राइट. सो अब कभी भी सेल्सफोर्स में इमेज चाहिए, वी हैव टू गो फॉर स्टैटिक्स. और यहाँ पे देखो नेचर का एक इमेज सेव किया है, नेचर का इमेज. और इसी नेचर के इमेज को जस्ट आई हैव कॉल्ड इट हियर. यहाँ पे देखो रिसोर्स नेचर, स्टैटिक रिसोर्स में सेव किया मैंने, उसको यहाँ कॉल कर दिया, ऑटोमेटिक इमेज आ गया. that's what I'm saying, Salesforce development is easy, right. Even I was from non-technical background. Before I was in mainframe, then I shifted to Salesforce. but I have seen कि 80% के बाद जो 20% कोड भी है ना, उसमें भी 20% में 15% आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है. 20% में 15% आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है. मुश्किल से 4 से 5% तो आपको थोड़ा सीखना है कि उस कोड को अरेंज कैसे करना है. दैट्स इट. दैट इज अबाउट द डेवलपमेंट. नो, आपको इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. नथिंग यू हैव टू रिमेंबर. जस्ट कॉपी एंड पेस्ट. दैट्स इट. और इफ यू वांट टू राइट कोड फॉर और इफ, ओके, जाओ यहाँ पे पूछ बोलो इसको, आई नीड व्हाट इफ. हियर वी हैव और इफ. क्लिक ऑन दैट. Here we have or if, जो हमने यहाँ यूज किया है, right. See, or if, क्या everything has been given, just we have to learn उसको यूज कैसे करना है. Fine. See, or if, बस एक बार आपने or if ले लिया, हर जगह कॉपी पेस्ट करते रहो. Fine everyone. So that is about the coding. क्या टफ है इसमें? इस कोड में 80% कोड वी हैव कॉपी एंड पेस्टेड एंड 20% वी हैव अरेंज्ड, वी हैव रिलेटेड इट. दैट्स इट. ओके एवरीवन. नाउ अभी क्या है, वी हैव 2 लाइब्रेरीज. वो एक है हमारे पास लाइटनिंग डिजाइन सिस्टम. आपको जस्ट दिखा रहा हूं कि सेल्सफोर्स ने कितना इजी कर दिया है कोडिंग, राइट. हियर वी हैव साइजिंग. ये भी आपको मैं दे दूंगा, डोंट वरी. अभी डेवलपमेंट तो बहुत बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एडमिन कंप्लीट करेंगे. सी, 2 कॉलम्स.
अभी आपको इनपुट्स इतने साइज का बनाना है, नहीं इतने छोटा बनाना है तो आई कैन टेक स्मॉल वन। इससे भी छोटा बनाना है, आई कैन गो फॉर 3 कॉलम, और छोटा हो जाएगा। और छोटा करना है, आई कैन गो फॉर 4 कॉलम, और छोटा हो गया। 5 कॉलम्स, जितना छोटा इनपुट बनाना है आपको। हियर वी हैव कोड, कहाँ है? हियर वी हैव द कोड। जस्ट कॉपी दिस कोड, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, जहां पे पेस्ट करना है वहां पेस्ट कर दो। तो आपको इसके साथ साथ कोडिंग भी दिया गया है, कोई कोड मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू कॉपी एंड पेस्ट। सी, आप देखो, आई कैन कॉपी दिस, कॉपी किया मैंने, आई कैन गो टू द कोड एंड आई लेट मी गो एंड पेस्ट इट। चलो मैंने आई कैन गो देयर एंड लेट मी पेस्ट इट हियर, जाके यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। सेव इट, सेव इट, इट्स सेविंग, सेव हो गया। नाउ लेट्स गो, इस यूआई को रिफ्रेश करो। इस यूआई को रिफ्रेश करो। सी, ये सारे यहाँ आ गए ना। हियर वी हैव, हियर वी हैव द बॉक्स, राइट। मैंने 3 किया, तीनों आ गए यहाँ पे। तो जस्ट यू हैव टू पेस्ट इट। सी, मैंने वही किया, जस्ट वी हैव टू पेस्ट इट, वी हैव पेस्टेड हियर। अभी आप इसके अंदर में चाहोगे, अगर आपको नहीं चाहिए, आपको बटन बनाना है, तो आप यहाँ से ये बटन कॉपी कर लो। सी, आप कुछ भी कर सकते हो, जस्ट यू नीड कॉपी एंड पेस्ट। इसकी जगह पे मैं आई कैन गो एंड कॉपी एंड पेस्ट दिस बटन, सेव इट नाउ। बस आपको पेस्ट कहाँ करना है यही तो सीखना है। आई कैन गो एंड रिफ्रेश इट नाउ। ठीक, बटन इज अवेलेबल हियर। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इस पेज पे बटन कहाँ डालना है। हियर वी हैव द बटन नाउ। आपको यहाँ डालना हो, यहाँ डालना हो, यहाँ डालना हो, कहीं भी डालना हो, कॉपी पेस्ट आना चाहिए। दैट इज द डेवलपमेंट इन सेल्सफोर्स, दैट इज द डेवलपमेंट। फाइन, राइट दैट नंबर, यहाँ से ऐड कर सकते हो आप। राइट दैट नंबर, यहाँ से भी ऐड कर सकते हो आप। ये भी ऐड, ये भी बटन भी काम करेगा, ये भी बटन वैसे ही काम कर रहा है। आपने बस बटन का लोकेशन चेंज कर दिया। सी, कितना इजी है। फाइन गाइस, चलो ऑब्वियस तो कुछ भी डाउट ना प्लीज से। सर मॉक सेशंस वगैरह कैसे रहेंगे? Hello? Mock session, see, after every topic that we are going to cover now, so for every topic we are going to discuss about interview questions, कि क्या क्या questions market में पूछते हैं, right? Because I used to take the interview, तो मुझे पता है ना market में इस topic से क्या क्या question बनते हैं और क्या पूछते हैं, right? So don't worry that Okay, sir. questions will be provided to you and you have to practice. See guys, मेरे सेशंस या मेरे सेशन का मेन एम है टू गेट ए जॉब, नॉलेज एंड जॉब। अगर आप सेल्सफोर्स के पूरे टॉपिक सीखने जाओगे ना तो आपको पूरा 1 साल लग जाएगा, लेकिन वो टॉपिक्स कभी भी अभी तक मैंने यूज नहीं किए। मेरे को एक्सपीरियंस हो गया 12-13 साल, तो मैंने कभी यूज नहीं किया उतना। तो अननेसेसरी उन चीजों को पढ़ना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जो कभी इंटरव्यूज में नहीं आते, जो कभी कंपनीज में यूज नहीं होते। वो होते इजी है, बट लोग कोर्स कंटेंट में शो कर देते कि हम ये भी पढ़ाते हैं वो भी पढ़ाते हैं। बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज, प्लीज फोकस ऑन द टॉपिक्स दैट आई एम गोइंग टू कवर एंड गो फॉर द इंटरव्यू, दैट्स इट। ठीक है everyone? And whatever the course we are going to cover now, either in admin and development, so that is available on the Radical website. You can go and download it. आप download करके देख सकते हो, and then you can show to anyone these are the contents that I'm going to cover in the batch. तो ये interviews के लिए enough है या नहीं? Okay, don't worry. सर कोई सर्टिफिकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेशन खत्म करना पड़ता है? See, Salesforce has a number of certifications, right? But whatever the knowledge I'm going to provide you ना, आप उससे चाहो तो ऐप बिल्डर का, एडमिन का और PD1, ये 3 सर्टिफिकेशन इजीली कर सकते हो। बट एक सर्टिफिकेशन का प्राइस है दैट इज $200, इट मींस 18,000। सो अननेसेसरी खुद के पॉकेट से पे करने से अच्छा है कि क्रैक एन इंटरव्यू, कंपनी में जाओ और फिर सर्टिफिकेशन करो, सो दे विल रिएम्बर्स दैट मनी 18,000। अननेसेसरी इसको फिर अपने पॉकेट्स लगाने का क्या फायदा, राइट? मैंने यही किया था और मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि अपने रिज्यूमे में मेंशन कर दो कि आई एम एडमिन सर्टिफाइड, आई एम डेवलपर सर्टिफाइड, PD1 सर्टिफाइड, राइट? क्योंकि कोई भी HR कभी भी सर्टिफिकेशन को चेक क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते। इससे क्या होता है, आपने मेंशन कर दिया ना,
आपको ज्यादा कॉल्स आएंगे, और जैसे ही आप किसी कंपनी में हायर होते हो, यू कैन से दैट नो एक्चुअली माय सर्टिफिकेशन गॉट एक्सपायर्ड, बिकॉज वो हर 6 मंथ में रिन्यू करना होता है। तो आप बोल दो कि मैंने एक्सपायर हो गया ऐसे, तो कंपनी सीधा बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, आप कर लो, हम रिइंबर्स कर देंगे। दैट इज वेरी सिंपल, एकदम सॉफ्ट नेचर होता है कंपनी का सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग। बट इनिशियल डेज में you have to show in your resume so that you can get some calls, interviews के लिए calls आएंगे आपको, ठीक है? ओके सर। ओके सर लाइटनिंग ऐप भी कवर Fine. होगा क्या इसमें? लाइटनिंग ऐप भी कवर होगा क्या सर? yes, lightning app builder, lightning admin as well as PD1, ये 3 सर्टिफिकेशन आप चाहो तो according to the knowledge you can do. ओके सर सर, तो इसके लिए हमें what मैम kind ने of 6 मंथ, हेलो, Yes, sorry, one by one please, इसके tell लिए me। हाँ, सर 6 मंथ्स का ड्यूरेशन बताया था सर अब मैम ने, तो इतना किस चीज के जाएगा लिए? क्या ड्यूरेशन? किसके मतलब लिए? कॉम्बो पैक जो है ना, लाइटनिंग ऐप और एपेक्स एंड सेल्सफोर्स, तो इसके लिए 6 मंथ्स का ड्यूरेशन बताया गया था। No, it's not about 6 months. See, lightning को 2 पार्ट में बांटा गया। Let me tell you guys, lightning को 2 पार्ट में बांटा गया। एक है आपका lightning aura framework और एक है आपका ओके lightning LWC, right? Lightning web ओके component, right? तो रिमेम्बर LWC आने के लिए, बिकॉज LWC के आपका एडवांस कोड है, LWC आने के लिए आपको aura कोड आना चाहिए। अब तक हमने जो भी फंक्शनलिटी पढ़ी है ना, ये सब हमने दिखाया, मैंने दिखाया ना, ये सब aura से बनाया हमने। इट्स aura framework। अगर आप यही चीज आप LW से भी बना सकते हो, लेकिन LWC आने के लिए पहले आपको बेसिक्स और आना चाहिए, बेसिक्स, राइट? तो दैट इज व्हाट, अगर आप, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को जॉब ऑरा पे ही लग जाती है, बिकॉज ऑरा ही आपका अच्छे इसमें कोर्स होते हैं, तो मैक्सिमम लोग इससे ही जॉब ले लेते हैं। बट किसी किसी को होता है कि नहीं मेरे को पूरा सीखना ही है, तो उसके लिए दे कैन गो फॉर द LWC। सो इट्स योर विश, अगर आप ऑरा और LWC आपको दोनों चाहिए, सो फॉर दैट इट विल गो फॉर 1 मंथ एक्स्ट्रा, इट मींस 4 to 4.5 months, right? But फाइन सर। but most of the folks they can got the job admin as well as aura development, aura lightning, ये भी lightning है, ये भी lightning है, दोनों lightning है, right? So now LWC, but what I'm saying that LWC is the future. जो फ्यूचर में जो भी डेवलपमेंट्स होगा ना आफ्टर 2000 you can say 25 or 27, that will be totally on LWC. बट अभी करेंटली सारे एप्लीकेशन किस पे चलते हैं? Aura पे, ठीक है? तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी फ्यूचर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप अभी पढ़ के जॉब्स तो ले लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। फिर ऑरा से LWC, अगर आपको ऑरा आता है ना, तो LWC में मुश्किल से आपको 20% एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, फाइन। लेकिन अगर ऑरा नहीं आता है, देन LWC आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, ओके? फाइन सर। प्रोजेक्ट कितने ले जाएंगे सर? आपका भी एक्सपीरियंस ही ज्यादा नहीं है ना, एक काफी है, एक पे तो लोग 5-5 साल शो करते हैं, ओके? ओके सर। So that one is quite enough। जितना ज्यादा प्रोजेक्ट आप मेंशन करोगे रिज्यूमे में ना, उतने आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बिकॉज डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन ऑन एवरी प्रोजेक्ट ना। इट्स बेटर इंक्लूड 1 प्रोजेक्ट इन द रिज्यूमे, गो फॉर द इंटरव्यू, टेक ए जॉब, और जब 1 साल 2 साल के बाद आप स्विच करो उस कंपनी के बाद से, तो फिर लगा दो 2 प्रोजेक्ट्स 3 प्रोजेक्ट्स, दैट इज नॉट ए बिग डील, ठीक है? इनिशियल में थोड़ा सा क्लेवर होके चलो, because you have to start your career in Salesforce, right? If you have further query, you can call the Radical and they will do the conference call with me also. If you have any further query or any chat you want to do with me personally,